आख्या उन्हें बहुत कुछ भाई कपड़े देंगे, रुपये देंगे, जमीना देंगे। वो कोई जमीन जमून नहीं हूँ जी इत्थे असीं इसे चाली बाई दी है। कोई कमा है किसी को 1.5 कमा है, किसी को 4 कनाल भी है, इस चाली सारी इ'यै होई गेई गरीबी जे बच्चे न उ'नें बेचारे कोई नौकरी नहीं, कोई पेशा नहीं, कोई बेचारे पढ़ाई लिखाई नहीं, साढ़े दी कक्ख भी नहीं। जब सरकार के पास जाते हैं सरकार बोलती तुम लोग पाकिस्तान से आ रखे हो, पाकिस्तान से तो आ रखे हो, मगर अभी तो हम लोग हिंदुस्तान में है ना, अभी तो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी तो नहीं है। अगू साढ़े अगे तीसरी पीढ़ी बदल जानी, चौथी तो फिर अगू साढ़े बच्चे अं पढ़ाएंगे, पैसे पूसे चौके लोगों को दुआरे धूरे, तो फिर साढ़े बच्चों को भी स्टेट्स बजारे मंगने, तो साढ़े सानू खर्चा करने की लोड़ है ना पढ़ाई के बच्चे। वो जोला पान पे नहीं बड़ टुक शुरू होया इस दादा बड़े गए, पता थोड़ा नहीं लगा। एक दूसरे मुर्दे लिए तो थल्ला लोग छपे दे निकले जेड़े बचा कोई। बुरी हालत है। West Pakistan refugees, 62 years since they left Sialkot in West Pakistan to come to Punjab in Hindustan, who entered Jammu and Kashmir, which was an inseparable part of India. 62 years since they have been reliving each bloody moment of the riots that tore them apart, which had forced them to leave Pakistan and flee for their lives. 62 years since Sheikh Abdullah, the Prime Minister of Jammu and Kashmir, stopped them at the Jammu borders and requested them to stay back and live at Arispura, Sampurn Kulia, Hiranagar, Kathua, Samba, Chakbute, Chakrohi, and 30 more villages bordering Jammu. 62 years since they were promised land, home, lane, drain, education, jobs. 62 years since they're waiting to be called state subjects, waiting to get ownership of the land they're living on. For a long time, these people have waited for a response from the government. Some people received a few acres of land on lease, but it did not belong to them. During the 1965 and 71 wars, these lands were snatched away from them. These people are leading a hand-to-mouth existence today, looking towards the government, wondering when they will get subjecthood, when they will get rights to ownership of land, employment, and education. A visit to the Chakrohi village, just 15 kilometers from the Jammu town, and a meeting with an old gentleman called Desh, octogenarian, West Pakistan refugee who has been fighting for the cause of subjecthood for lakhs of his fellow refugees for the last 6 decades. ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹਾਂ
His bright eyes and reverberating voice is still resonating with hope for his land and for his people. अगर करने मौका मिले तो मैं मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर जरा उन्हें मिला ਜਾਂ फिर एक गल नवी हो रही ये मैं एक नवी गल लगा करन मैनू बड़ा अफसोस है इस गौरमेंट से कि एक पासे पहले सांस दे नाल ते दूजे पासे 3 पीढ़ियों के बाद भी इत्थों दी सीढ़ियां नहीं मिली। पूरे 63 साल हो गए ने 63 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ कोई ज़मीन नहीं को है तो थोड़ी बहुत है कोई नौकरी नहीं कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा जो पहले बच्चे थे वो बेचारे खज्जल खुआर हो गए कोई कितने जा रहा कितने जा रहा हूँ ये जी गौरमेंट सुनती नहीं की करना है की नहीं करना ना तो असी पंचायत खड़े हो सकते हैं जब सूँ वोट ही नहीं तो असी पंचायत खड़े क्यों करेंगे। It was a bloody year of 1947. With the stroke of midnight, India got her freedom but with a price. Pakistan was the price. And massacre of thousands in the name of partition was the outcome. A holocaust so tragic that millions of refugees are still reeling under it. Nearly 50,000 Hindus and Sikhs were massacred in the post-partition riots at Muzaffarabad, Poonch and Mirpur districts of Pakistan, leaving thousands homeless, helpless to make a choice. To either choose an uncertain future in Pakistan or to find a safer home in India. They preferred the latter as they were mostly scheduled caste Punjabis wanting to settle in Punjab in Hindustan. Some as young as Biro Devi, who had just got married and had youthful dreams in her eyes. Around 90 years old today, came to Shakarpur area of Jammu borders in 1947 with her husband and other family members. They stayed back because Sheikh Abdullah requested them to stay. He gave them a few acres of land on lease to cultivate, promising them all facilities. Biro Devi's family has been daily wagers for the last 62 years, leading a life of poverty, uncertainty, and hopelessness. सौरी मेरे था द्वारा उठे मैं ते पट्टी होवे ते बाल बच्चा सारा इत्थों दा गया नहीं ते इयां बेचारे जागत कुड़ियां कोई बड्डो बड्ड तां वै हां देखो भी खाइए नची नुचिए भुखे ते टुई पौना बच्चे गल्ला करना लाई लेना कोई सपना उठों टुरे निकले राती इधर वो कैंप जुए वो कैंप लगा है नगोटा फिर नगोटे से 5-6 साल उठा कढ़ी है भाई ये तीजे दिखे और कहीं रखना जमीन से एक माँ वो भी छुट्टी आए। Like Biro Devi, there were other poor Hindus who entered Jammu with dreams in their eyes, dreams that were already shaking in the aftermath of independence and partition, of bloody riots and displacement from their own lands, who had fled Sialkot in Pakistan, fearing for their lives. ਬਾਰਡਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਮੀਲ ਹਟਵੇਂ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਾਮੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚਾਲੇ ਨਿਕਲੇ
ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਲਈ ਆਏ ਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਗ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ। ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। These 5,000 odd families settled in the bordering areas of Jammu, hoping for all the promises to be fulfilled. But today, living a life where their children are doing petty jobs, dropping out of school, denied jobs in government sectors, and living a life where their human rights are being violated every single moment, thus losing all hope for a better future. जो आगे हमारी बच्चे हैं, जनसंख्या है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उनका रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। दिहाड़ी लगा के कैसे कमाए, कैसे करेंगे। अगर उनको भी गवर्नमेंट अगर स्टेट सब्जेक्ट दे देती तो आर्मी में चाहे सिविल में कहीं भी ज्वाइन करते तो अपना रोटी रोजी शान से कमा के खा सकते थे। जैसे इधर के रहने वाले बोल देते तुम लोग तो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, तो उस टाइम हमारे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा दुख होता। अगर हम भी यहाँ के रहने वाले होते तो हमको ऐसी बात कोई बोलता नहीं। Deshraj, Biro Devi, Gyan Chand, Kishori Lal, Amar Singh, and many others. Are they just faces and names whose voices are going to fall on deaf ears? What is their fault if they are demanding and seeking residency and citizenship? They are, after all, Indians. Today, they are crying themselves hoarse to be called Indians and subjects of Jammu and Kashmir. Many leaders came to power and went, but the denial to grant them their basic fundamental right remained the same. This is a clear violation of human rights. In the last 62 years, these schedule caste Hindus have suffered greatly. Who will take the responsibility for this? This group of 2.5 lakh people have very basic demands. Most of them unheard, unfulfilled, ignored. हमने लीगल स्टेटस भी देखना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख में आर्टिकल 370 है, उसमें वो जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर है उसी को सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये बेनिफिशरीज जो हैं कुछ गवर्नमेंट में भी, आप समझते हैं हमारी जो जम्मू कश्मीर रियासत है ये कोलिशन सरकार के थ्रू यहाँ पे चल रही, तो पॉलिटिकली कोई ऐसा डिसीजन दे पाएँ जिसमें सब लोगों को, जिसमें रीजनल एस्पिरेशंस भी लोगों की है, सब रीजन्स भी बीच में आए, तो इतनी पार्टीज़ को सब इकट्ठा करना ये बड़ा सा आसान काम नहीं। एक्चुअल में जो स्टेट सब्जेक्ट का इशू है जो महाराजा के टाइम का है, उसमें भी इन्होंने कैटेगरी वाइज दिया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। और उसमें लास्ट में इन्होंने ये भी दिया है कि स्टेट सब्जेक्ट कोई ऐसी जगह, ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इनको ना मिले। अगर ये लोग रियायतनामे पे या इजाज़तनामे पे किसी को दे देते हैं तो वेस्ट पाकिस्तानियों का भी हक बनता है। और उसमें क्लियर कट लिखा है कि 10 साल जो आदमी एक जगह पे रहता है वो वहाँ का नागरिक होगा। लेकिन ये तो पिछले 60 सालों से है, लेकिन इनका राइट बनता है। लेकिन एक ऐसी सिस्टम है, ऐसा एक पॉलिटिकल इशू बनाया इन्होंने जिसकी वजह से इन लोगों को आज तक वली का बकरा बनाया गया है। इनको यहाँ का जो नागरिक अधिकार है वो नहीं मिल रहा। Finally, on November 2007, Wadhwa Committee report was submitted to the state government, stating
the demands of the refugees, particularly the West Pakistan refugees, which clearly states, West Pakistan refugees are very much citizens of India and there is no separate citizenship of the state. As most of displaced persons of 1947 from West Pakistan belong to SC category, government may issue separate circular instructions for granting to them reserve category certificates applicable only for recruitment to posts under the central government or other state governments and paramilitary forces. This is a justified demand government may consider. The reaction and decision on the recommendations of the report is still pending, leaving the question hanging in the air. When will a decision be taken on the recommendations? When will these poor souls get justice? When all over the country, reservations have already been implemented in all job sectors. How come these economically and socially underprivileged people are still awaiting justice? हम इसको कोशिश करें कि इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर हम स्टेट सब्जेक्ट ना दे पाएँ तो इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम दे पाएँ भी वाकई वो यहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं। 62 वर्षों के बाद और फिर भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर इनको देना है तो पीआरएस दीजिए, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो हमारा है पीआरसी, उसके तहत इनको लाया जाए और सारे के सारे अधिकार जो है वो उनको दिया जाए। इन लोगों को आज तक हमारी नागरिकता भी प्रदान नहीं की गई, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो सकता। असल में जो जहाँ जम्मू कश्मीर का सिस्टम है, यहाँ तो स्टेट सब्जेक्ट के बिना किसी को नौकरी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ जो रिफ्यूजी इशू की बात है इसके लिए उन्होंने कहा है कि इनको तब तक हम स्टेट सब्जेक्ट नहीं दे सकते जब तक यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी ना बने, तो टाइम भी हम इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देंगे जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में मिलता है। उससे क्या होगा कि यहाँ हमारे बच्चों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरियाँ वगैरह हैं वो मिल जाएगी, बाकी डोमिसाइल से कोई और फ़ायदा होने वाला नहीं है। Giving them access to the armed forces and admissions in the colleges on the basis of the domicile certificates is indeed a ray of hope, but too much of water has passed under the bridge. Too much of bitterness has made their resolve to fight stronger. The countdown has begun to see the end of this serpentine road of struggle, to get an impartial hearing, and to ensure that justice is albeit delayed but not denied. On one hand, the rest of the refugees were compensated for their losses. West Pakistan refugees are still reeling under years of pain, neglect and poverty, still waiting to call Jammu and Kashmir their home, still waiting to be called state subjects. West Pakistan refugee living a life of a slave in a free country.